alcohols may we know that the functional group of alcohol is hydroxyl functional group, which is OH. Alcohol has a hydroxyl functional group. It's known as OH, or sometimes it is called as hydroxy, or sometimes it is also known as hydroxyl functional group. General formula for alcohol is CnH2n plus 1 OH. If we see a homologous series of alcohol, so their name, their molecular formula, their displayed formula, structure formula, and finally skeletal formula. The name for the first alcohol is मीथेन होता है ना, जैसे तो आखिर का ई हटा के we will write OL, methanol. The formula is CH3OH. The displayed formula is like this. We have to show oxygen and hydrogen bond as well in the displayed formula. Sorry, the ethanol का बना. The displayed formula is like this, and the structure formula is CH3OH, and the skeletal formula would just have one line and OH written to it. Similarly, alcohol with 2 carbon atoms is ethanol. Its molecular formula is C2H5OH. Its displayed formula is CH3, CH2 and OH. Its skeletal formula is CH3, CH2OH, and its skeletal formula would structure formula is CH3, CH2OH, and skeletal formula would be, because this is 1 carbon, 2 carbon, मैंने 3 carbon लगा दिए तो be like this. This shows 2 carbon and this shows OH. सही है? Propanol is C3H7OH. 1, 2, 3. CH3, CH2, CH2OH. बना लोगे आगे ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, एप्टानॉल, ऑक्टेनॉल. आगे बढ़ जाए. चलो देखो, वन कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू डिस्कस इन अल्कोहल, जब ने पहले कभी ओ लेवल में नहीं किया. We have to talk about acidity of alcohols. मतलब we have to compare acidity of alcohol with water. अब हमें ये तो पता है ना कि acidity का क्या मतलब है. Anything substance that gives protons or proton donors are known as acids. So basically alcohol जो होता है ना, they are not acidic in nature. However, if we add alcohol into water, they will give H positive ion. देखो, कोई भी चीज अगर acidic होती है तो वो क्यों होती है? Let's say if HCl is acidic, because when HCl is added into water, HCl gives H positive ion, which is a proton. HCl is a proton donor. Let's say if we have ethanoic acid, as carboxylic acids तो याद है ना वो level में जो पढ़े थे. If we add ethanoic acid into water, so it will ionize, though it is a weak acid, but it will partially ionize to give ethanoate ions and H positive ion. So
substance that gives H positive ions are acids, right? अच्छा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाटर के मॉलिक्यूल भी एक्चुअली दे आर सेल्फ आयनाइज्ड विद ईच अदर टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो क्या वाटर को हम एसिडिक कहते हैं? यू रिमेंबर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ O लेवल where you used to say that if you have aqueous electrolyte, जैसे for example if we have aqueous sodium hydroxide, so in electrolyte of aqueous sodium hydroxide we have sodium ions, hydroxide ions, and we also have H positive ion and OH negative ion due to water। मतलब वाटर भी तो आयनाइज होता है ना, तो क्या वाटर का मॉलिक्यूल एसिडिक कहलाएगा बिकॉज इट इज गिविंग H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्चुअली एसिडिटी को हमने बेंचमार्क वाटर के आयन से ही बनाया है, because if any water molecule that can give water molecules at specific temperature or standard temperature, they give 1 exponent minus 4 mole per decimeter cube of H positive ion. So any solution that has this much number of H positive ion is considered to be neutral. Neutral solution does not mean zero H positive ion. Neutral solution means if H positive ion has a concentration of 1 exponent minus 4 mole per decimeter cube, then this solution is regarded as neutral and its pH is equals to 7. आवाज सबके पास नहीं आ रही है? आ रही है? खुबैब, आर यू श्योर आप इसी क्लास के हो? कौन सी क्लास लेने आए हो? O लेवल केमिस्ट्री और AS केमिस्ट्री? खुबैब, अच्छा देखो हमारे पास if we have 1 exponent minus 7, अच्छा ये 1 exponent minus 4 लिख दिया, this is 1 exponent minus 7. You do not have to remember this value for now. You just have to remember that any neutral solution they have this much number of H positive ions. और आपको ये याद रखना है कि उसमें 0 H positive ions नहीं होते. If any substance which is unable to give H positive ion greater than this concentration is not considered to be acidic. If you have an alcohol like ethanol, C2H5OH, and if you add this alcohol into water, it means if you are taking an aqueous ethanol, so it will ionize to give H positive ion, जो oxygen के साथ hydrogen है ना आखिर में, this hydrogen will get ionized to become H positive ion in aqueous solution. So this was ethanol, and this ion is known as eth oxide ion. और H positive ion मिल रहा है solution में, तो ethanol is giving H positive ion, but ethanol is not considered to be acidic. Reason being because the amount of H positive ion it gives is lesser than water molecules. जो H positive ion की quantity water ionize होकर देता है वो उससे भी कम है, तो alcohol does not qualify to be called as acidic. So in syllabus they have added one new concept, कि compare the acidity of alcohols and water. So alcohols are less acidic than water. That what you have to remember. और इसकी explanation मैं अभी लिखवा देता हूँ. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, इथेनोइक एसिड CH3COOH. When carboxylic acid is added to water in aqueous solution, it will ionize to give ethanoic acid will give ethanoate ion and H positive ion. This ion is known as ethanoate ion, coming from ethanoic acid. Similarly, when alcohol ionizes to give negative ions, the ion is known as eth oxide. For example, if we have propanol, C3H7OH, it ionizes to give C3H7O negative. This is known as prop
oxide. In general terms, कोई भी अल्कोहल जब आयनाइज होगा तो वो जो आयन होगा that would be called as alk oxide. In case of ethanol, it is eth oxide. In case of propanol, this is prop oxide, and in case of butanol, it would be called as but oxide. Okay, but the ionization of alcohol is very less, even less than that of water. That's why alcohols are not qualified to be called as acid. So this degree of ionization or degree of dissociation is very, very less. Or in other words, we can say, as it is a reversible reaction, weak acid या weak alcohol जब भी ionize होते हैं तो they form a reversible reaction. The position of equilibrium lies further towards left hand side. Hence, concentration of H positive aqueous ion is much lower. अच्छा ऐसा क्यों होता है? If we consider a water molecule, water is H2O, right? So in water molecule, when water molecule ionizes, we get OH negative ion and H positive ion. This ionization is also a reversible reaction. However, this OH negative ion, it is attracting back its H positive ion to form an ionized molecule of water. लेकिन ये effect जो है ना alcohol में ज्यादा है, stronger है. Let's say if we consider ethanol, and if ethanol is added into water, it will ionize to give eth oxide ion, which is negatively charged, and H positive ion. However, this negative charge over the eth oxide ion has a very small charge density. मतलब इसकी जो strength है ना negative charge की वो small है. वो क्यों small है? उसका रीजन ये है कि इसके साथ जो alkyl group लगा हुआ है, we have studied in primary, secondary, and tertiary carbocations that alkyl groups are electron releasing group. Electron donating group or electron releasing group, they actually push their electrons into their neighboring atoms. जैसे ये जो C2H5 है, this must be pushing their electrons to the neighboring oxygen atom, due to which this negative charge will become more stronger. Stronger होने का क्या मतलब है? I think मैंने weaker कह दिया था, I'm sorry, but this negative charge will become more stronger. और जब ये more stronger हो जाएगा तो it will attract back this H positive ion easily, और वो position of equilibrium left side पे ज्यादा easily shift हो जाएगी. Unionized molecule ज्यादा होंगे as compared to the ionized molecules. सही है? समझ आई बात? तो इस बात को ना हम देखो इस तरह से लिखेंगे. इसी एक्सप्लेनेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आप याद भी रखना. दिस इज बिकॉज of the electron donating alkyl
group bonded to negatively charged oxygen atom in the eth oxide ion. So this positive, इसको हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं. सेम their कार्बोकेटाइन में था. This positive inductive effect increases electron charge density on oxygen atom hence eth oxide ions accepts H positive ions more readily than the hydroxide ions of water. देखो ये तो पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई हमारी. अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इतना बड़ा तो नहीं लिखोगे. आई एम एक्सपेक्टिंग ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि 2022 में दे हैव एडेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिलेबस, वरना ये A2 में ही रहता था हमेशा. तो जब इन्होंने इसके सिलेबस में फर्स्ट टाइम डाला है तो उसका अभी तक 2022 की जो भी सीरीज हुई है ना, मई जून अक्टूबर नवंबर, उसमें इसका क्वेश्चन दिखा नहीं है अभी तक. तो 2023 में हाई चांसेस हैं कि वो आ जाए. तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? बाय alcohols are less. First, you have to remember that alcohols are less acidic than water. Why alcohols are less acidic than water? Or in other words, you can also ask it, compare the acidity of alcohol with water. So first, you have to state that alcohols are less acidic than water, and then you need to explain the reason. तो इसमें क्या लिखोगे? In alcohols, alk oxide ion formed as high negative charge density on the oxygen atom due to positive inductive effect of alkyl groups. So alkoxide readily accepts H positive ions and equilibrium stays further towards left hand side.
क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। जो आगे बढ़े। ओके। ओके, रिएक्शंस टू मेक अल्कोहल्स। अल्कोहल हमने कौन कौन से रिएक्शन से बनाए हुए हैं, सारे रिएक्शंस आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज जो ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो, व्हेन यू रिएक्ट any alkene with steam in the presence of phosphoric acid as a catalyst, this will produce alcohol. इथीन को रिएक्ट कराओगे तो इथेनॉल बनेगा। दिस वाज हाइड्रोजन एडिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड में एडिशन टेक कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, और टेम्परेचर जो होता है वो अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस का होता है, और प्रेशर होता है 65 एटमॉस्फेयर का। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए हमने पढ़ा था एल्कीन की हाइड्रेशन, ये वाला ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। तो कोल्ड KMnO4 में जब एल्कीन को डालते हैं तो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, तो डायोल बन जाता है। रिमेंबर दैट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस प्रोपीन, इसमें जब हम कोल्ड KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। तो एक तो ये रिएक्शन था एल्कीन से अल्कोहल बनाने का। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजनो एल्केन्स बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, SN1 SN2 जो हेलोजनो एल्केन्स में पढ़ा था। तो इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और वो ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करा के खुद लग जाएगा और अल्कोहल बना लेगा। एक रिएक्शन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर एक रिएक्शन और है जिसमें रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड है, अभी एल्डिहाइड हमें आगे पढ़ना है। एल्डिहाइड को रिड्यूस करके हम वापस अल्कोहल बना सकते हैं, या कीटोन को रिड्यूस करके हम वापस सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, तो ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे अभी। ये अभी हमने पढ़ना है, लेकिन एस्टेरिफिकेशन से भी, एस्टेरिफिकेशन ओ लेवल में तो पढ़ा था, अगर नहीं याद है तो कोई मसला नहीं है, वो हम दोबारा पढ़ेंगे अभी। कि एस्टेरिफिकेशन में जब एस्टर को वापस ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, तो ये वाला रिएक्शन भी अभी हमें पढ़ना है। ये फाइल मैंने अगर आपको नहीं भेजी हुई तो मैं भेज देता हूँ अभी। इसमें से जरा ये ना जरूर रीड आउट जरूर करना है, ये सारी चीजें ना हम इसी फाइल में से अभी पढ़ेंगे आगे। चलो पहले टाइप्स ऑफ अल्कोहल देख लेते हैं जरा, कौन कौन सी होती हैं। जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलोजनो एल्केन्स देखे थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइंस देखे थे, इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल्स भी होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स भी होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल इन विच carbon to which hydroxyl functional group is attached, if this carbon is directly bonded to one carbon atom and two hydrogen atoms, then such a alcohol would be called as primary alcohol. सिमिलरली प्राइमरी अल्कोहल में अगर कोई भी हाइड्रोजन, मिथानॉल है जैसे, तो उसको भी हम प्राइमरी में ही काउंट कर लेते हैं अगर कोई अल्काइल ना हो। If alpha carbon, remember what alpha carbon was? Alpha carbon is the carbon under consideration. Right now, which carbon is under consideration? The carbon to which hydroxyl functional group is attached. हम alpha carbon की अगर बात कर रहे हैं तो it has only, if one alkyl is attached to it, then it is a primary alcohol.
और सेकेंडरी अल्कोहल फिर क्या होगा? Let's say if alpha carbon has two alkyls directly attached to it, that can be two methyl as well as that can be one ethyl or one ethyl, that doesn't matter, but directly two carbon attached होने चाहिए. So this is secondary alcohol. और tertiary alcohol क्या होगा? If alpha carbon has three alkyls directly attached to it and zero hydrogen. So this is tertiary alcohol. जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलोजिनो एल्केन्स था, वैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स भी है. क्लियर है ये बात? आगे बढ़े. प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगा जिसमें कार्बन अल्फा कार्बन, मतलब कार्बन वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड हो. मतलब डायरेक्टली एक अल्काइल अगर अटैच्ड हो अल्कोहल के साथ तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा. और अगर डायरेक्टली दो एल्काइल अटैच्ड हैं जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस कार्बन के साथ, अब वो एल्काइल की कोई भी चेन हो सकती है, वो एक कार्बन की चेन भी हो सकती है, वो 10 कार्बन की चेन भी हो सकती है. ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा जिसमें अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली दो एल्काइल अटैच्ड हैं. बट इफ अल्फा कार्बन हैज थ्री एल्काइल डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, देन दैट विल बी कॉल्ड एज टर्शियरी अल्कोहल. गॉट इट आशा? आगे बढ़े. अच्छा, अल्कोहल्स के कुछ रिएक्शंस हैं. नंबर वन इज combustion reaction of alcohol. Combustion अगेन वैसा ही है जैसे अल्केन और अल्कीन में था, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन. तो कंप्लीट कंबशन बेसिकली कंबशन दैट टेक्स प्लेस इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना. अल्कोहल इथेनॉल जो है जैसे इसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है. जैसे वी हैव C2H5OH burned in excess of oxygen, it will produce carbon dioxide and water. इसको बैलेंस कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव two carbon atoms, so moles of carbon atom would carbon dioxide would be 2. How many hydrogen are there on the left hand side? 5 and plus 1, 6 hydrogen atoms. So moles of water would become 3. 6 divided by 2 is 3. At the right hand side we have to do the 4 oxygen due to carbon and 3 oxygen due to water. So there are total of 7 oxygen atoms on the right hand side of the equation, and on the left hand side we have 1 oxygen with alcohol. So together we have to make 6 more oxygen. तो किस O2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 are 6 and 1 oxygen is from here from formula of alcohol. 7 oxygen हो जाएंगे. बैलेंस कर लोगे ये इक्वेशन? अगर मैं कहूँ we have butanol which is C4H9OH and it is combusted to produce carbon dioxide and water. Can you balance this equation? You have 4 carbon atoms in the molecule of butanol, so moles of carbon dioxide would be 4. How many hydrogen are there? 9 plus 1 is 10. So moles of water would be 5. 10 divided by 2 is 5. On the right hand side, we have 8 oxygen due to carbon dioxide and 5 oxygen due to water. So 8 plus 5 is 13. So on the left hand side, we have to make 13 oxygen. तो हम O2 को 13/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी तो है ना. ब्यूटेनॉल के अंदर भी तो एक ऑक्सीजन है, तो मुझे 13 नहीं 12 बनाना है सिर्फ. तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर है बात? आगे बढ़े.
ओके। अच्छा, अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स इंक्लूड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्कोहल जो है ना वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। जैसे हैलोजन एल्केन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था ना सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये उल्टा भी हो सकता है। क्लोराइड जब हाइड्रोक्साइड आयन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो हैलोजन एल्केन दोबारा बन जाएगा। तो बेसिकली रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स है। अच्छा, HCl जो है ना हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं बनाते हम अल्कोहल को। जो CH3CH2 इथेनॉल है, उसमें सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना पहले रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl गैस बनाता है, और फिर ये HCl जो है वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके क्लोरोइथेन और वाटर बनाता है। तो आपने इस सीक्वेंस में ये एक दो इक्वेशन याद रखी। दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और इसके लिए हम ना हीट करेंगे ऑफ कोर्स। दिस इज हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन जो है हमारे पास। चले आगे। तो दिस इज आल्सो नोन एज हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि OH हट गया और हैलोजन लग गया ना। और रिफ्लक्स हमने इसलिए किया है क्योंकि डिस्टिल करना होगा इसमें ना। सेकंड, अल्कोहल बनाने के लिए एक रिएक्शन और है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड के साथ, which is SOCl2. Sulfur dichloride oxide can also be used to substitute a chlorine atom into an alcohol molecule. So C2H5OH reacted with SOCl2, तो इसमें प्रोडक्ट में HCl बनती है इन द फॉर्म ऑफ गैस, एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब HCl जो बन रही है ना इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो उसके ना स्टीमी फ्यूम्स होता है या वाइट फ्यूम्स होता है। अब देखो पहले वाले रिएक्शन में भी तो हेलोजन एल्केन बन रहा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें हमें ना डिस्टिलेशन करवानी पड़ रही है, क्योंकि जो हेलोजन एल्केन बना है उसके अंदर जो है वो एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बना हुआ है हमारे पास, जो HCl गैस बनाने के लिए बना है। साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बना हुआ है, तो वो भी बीच में बना आया हुआ है। तो हमें उसमें से हेलोजन एल्केन निकालने के लिए हीट करके डिस्टिल करना पड़ता है। लेकिन सेकंड इस रिएक्शन में खास बात क्या है कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, अपार्ट फ्रॉम हेलोजन एल्केन, अदर प्रोडक्ट्स आर इन द गैस फॉर्म, so they will escape the reaction mixer, so you do not have to distill off this product। तो आपको डायरेक्टली बस नीचे वही बचा रह जाएगा। Note that in this reaction, the two byproducts of the reaction are both gases. These gases escape from the reaction mixer. The halogen is formed without the need to heat the reaction mixer. This is done at room temperature, no heating is required. We can also use phosphorus halides to provide the halogen atom for this substitution. The third method in order to produce halogen from alcohol is this, जिसमें अल्कोहल को हम PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें भी HCl गैस बनेगी। एंड देयर इज अनदर रिएक्शन जो हम, जैसे अगर मुझे क्लोरीन के अलावा आयोडीन लगाना है, हेलोजन एल्केन जो बनाना है वो क्लोरोइथेन नहीं आयोडोइथेन बनाना है, तो उसके लिए मैंने फास्फोरस ट्राई आयोडाइड फास्फोरस क्लोराइड यूज किया हुआ है ना अभी तो। लेकिन अगर मुझे इसकी जगह आयोडीन लगाना है तो मैं क्या करूंगा, C2H5OH PCl3 की जगह PI3 यूज कर लेंगे, तो आयोडीन बन जाएगा, मतलब आयोडो इथेन बन गया वो। साथ में इसमें H3PO3 फास्फोरस एसिड। लेकिन हीट करना पड़ेगा PCl3 या PI3 के साथ।
लेकिन जब PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे तो हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ये काम रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। ये देखो, ये याद करने पड़ेंगे, इनका कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास सिलेबस में, तो ये सिर्फ याद करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो जा सकते हो अभी आप लोग क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल्स तो खत्म हो ही जाएगा, थोड़ा सा रह गया है। कार्बोनाइल कंपाउंड भी स्टार्ट कर देंगे, फिर पास पेपर्स पूरी ऑर्गेनिक के साथ ही कर लेंगे, या तो एल स्टार्ट कर देंगे, उसी के साथ हो जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी की ऑर्गेनिक, एएस ऑर्गेनिक अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, तो रात में 11 से 12 बजे पीएसटी की बात कर रहा हूँ, हमारी ऑर्गेनिक के पास पेपर्स की क्लास होगी, तो वो अटेंड कर सकते हो आप लोग। मैं ग्रुप पे मैसेज भी कर देता हूँ। हाफिज। सर जी। सर आपके पास ऑर्गेनिक के हैंडआउट्स होंगे, मतलब आपने अभी जो ग्रुप पे भेजा वो नोट्स भेजे ना, मुझे हैंडआउट्स मिल सकते हैं? हैंड आउट और नोट्स में क्या